Hi students, good evening to all of you and welcome to my channel. Today's topic is structure of gametes. Gamete कहले दी प्रकार रो गोटे होची मेल गैमेट स्पर्म आ गोटे होची फीमेल गैमेट ओवम. ताहले ए दीटे जक गैमेट रो स्ट्रक्चर को भलिया आजिर टॉपिक रे हम आलोचना करबा. ताहले प्रथमे देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ दैट स्पर्म. पिले स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मेल गोनाड टेस्टिस. सेइथि पई टेस्टिस को कहा जाउची साइटोजेनिक एंड एंडोक्राइन इन नेचर. Cytogenically it produces that gametic cells in the form of that sperm, and endocrine akarre ye secrete karuchi hormone which is related to that of male reproductive system, which help in the process of spermatogenesis. ताहले प्रथमे हमें देखिबा स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म. पिले माने स्पर्म्स आर मोर्फोलॉजिकली सिमिलर. जदि आर मोर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर देखिबा all sperms are morphologically similar, but human sperm is about 0.02 millimeter long. So it is microscopic, minute. So human sperm is microscopic, minute and measuring about 0.02 millimeter long. Sperms are living cells. अन्य सेल मानक संगे जदि कंपेयर करिबा ताहले स्पर्म मध्य गोटे लिविंग सेल. बट दिस लिविंग सेल इज मोटाइल, अर्थात इट कैन मूव. ये मूवमेंट करि पारुची बोली आकु आमे कहिले मोटाइल. सो स्पर्म्स आर लिविंग सेल्स and motile. They are microscopic and structurally जदि हमें देखिबा all sperms are similar on structural point of view. तार स्ट्रक्चर अनुसार देखले सब स्पर्म गुडी का एका भलिया एवं एका भलिया कंपोनेंट रे तयारी. ताहले स्पर्म रो स्ट्रक्चर जदि हमें देखिबा it is an elongated structure and formed of head, neck, middle piece, tail and end piece. ताले समस्त स्पर्म गुडी कर ये इंपोर्टेंट पार्ट्स गुडी का थाए. ताले एक रहला हेड, दुई रहला नेक, देन मिडिल पीस, and tail, which is followed by end piece. ताले स्ट्रक्चरली जदि हमें स्पर्म को देखिबा ताले स्पर्म इज कंपोज्ड ऑफ दीज 5 कंपोनेंट्स. ताले प्रथम रे आसिला कोन हेड. पिले माने हेड इज द anterior most part of that sperm. स्पर्म anterior most part रे थिला स्ट्रक्चर को कहा गला head, which is composed of acrosome plus nucleus. The head is formed of acrosome and nucleus. पिले माने acrosome काहे को कहिबा. पिले माने आउटिके जदि मन पकेइबो तमे माने ताहले प्रीवियस क्लास रे हमें पढ़ी थिले जे acrosome is formed from Golgi complex. acrosome तैयारी हिची कोठार Golgi body. It is formed from Golgi body. So pilare previously I have told you that some vacuoles of that Golgi body get enlarged and lies above the nucleus to form that double layer cap-like structure. The bulging structure, double layer cap-like structure that lies above the nucleus, that is called as acrosome. एवं कहितले जे acrosome तयारी होची गलगिरु एवं acrosome तयारी हे सारिला परे अवशिष्ट जहा रहउची acrosomal
Golgi पाखरे, that is called as Golgi rest. ताले पिले माने the bulging structure that lies just above the nucleus, which is formed of two layers and there is a cavity present within it. It is called as acrosome. So here is the acrosome and there is a cavity present within it which is filled with a fluid. That is called as acrosomal fluid. Acrosomal cavity is filled with a fluid called as acrosomal fluid, and that acrosomal fluid contains enzyme called as hyaluronidase. So the enzyme that are present within the acrosomal fluid, that is called as hyaluronidase. Hyaluronidase, the enzyme or sperm lysin, which help to dissolve the egg membrane during the process of fertilization. पिलेमाने fertilization समय sperm जेतेबेले egg भीतर को entry करिबा को जाउची, first of all the acrosome touched to that of outer layer of egg. Then it ruptures its wall and releases that enzyme hyaluronidase or sperm lysin to dissolve the egg membrane, and which facilitates that sperm to enter into the egg. Then egg भीतर सहजरे एंट्री करिबा पाई ए acrosome भीतर थिबा lysis enzyme hyaluronidase help to enter the sperm. Just below that acrosome there is an elongated structure present. It is called as nucleus. ताहले acrosome रो just तळे head region रो अन्य एक important part हैला nucleus, which is covered by peripheral membrane, and there is a dense cytoplasmic layer present, that is the covering of nucleus as well as middle piece, that is called as manchit. पिले माने normally गोटे cell रा nucleus भितर कौन थाए? It contains DNA plus histone protein. But in case of that sperm, it lacks that histone protein, but it contains another protein that is called as prostamine. पिले माने histone protein बदलरे अच्छी कौन? Prostamine. ताले DNA and the protein present within the nucleus, that is called as prostamine. ए prostamine protein रहिबार माने होउची पिले माने histone having higher molecular weight, but prostamine having lesser molecular weight. ताले कम molecular weight हेले sperm nucleus become lighter, and due to that lighter it is able to move very fast within the female genital tract. सहजरे मूवमेंट करबा पई हालुकाटा बेसी मूव करबा स्पीड रे, तेणु सहजरे मूवमेंट करबा पई एवं वेट लॉस करबा पई न्यूक्लियस मध्य डीएनए संगरे प्रोस्टामिन प्रोटीन अछि, व्हिच इज having lesser molecular weight in comparison to that of histone protein. ताले न्यूक्लियस भीतर कोन रहिला? न्यूक्लियस भीतर डीएनए रहिला, न्यूक्लियस भीतर प्रोटीन मटेरियल रहिला, दैट प्रोटीन मटेरियल इज कॉल्ड एज प्रोस्टामिन. पिले माने नेक्स्ट स्ट्रक्चर को आसीबा वर्तमान, दैट इज नेक. सो बिलो द nucleus, in the depression of that nucleus there is a centriole present in the neck region, that is called as proximal centriole. Here one centriole present, that is called as proximal centriole, and that proximal centriole lies at the depression of that nucleus. ताले nucleus रा depression रे गोटे
सेंट्रियोल अछि ताको कहा गला इट इज प्रोक्सिमली प्रेजेंट दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज प्रोक्सिमल सेंट्रियोल पिले माने ई प्रोक्सिमल सेंट्रियोल रो फंक्शन जदि जानिबा ताहले ए प्रोक्सिमल सेंट्रियोल हेल्प इन द क्लीवेज ऑफ दैट जाइगोट पिले माने क्लीवेज होउची द सेगमेंटेशन ऑफ फर्टिलाइज्ड एग थरे कहि रखुची एक लैक्स दैट सेंट्रियोल so proximal centriole is necessarily required to initiate that cell division, to initiate the segmentation, to initiate the cleavage. So it help in cleavage for segmentation of that fertilized egg. Quota proximal centriole. Just below that proximal centriole, perpendicularly arranged another centriole. Say centriole को कहा गया distal centriole. It is distally present. That is why it is called as distal centriole. And distal centriole forms the basal granules of axial filament. पिले वाले distal centriole कौन करूची? Proximal centriole cleavage रे help करूथिबा बेले distal centriole काम हैला it form the basal granules of axial filament. पिले माने हियर दिस इज द axial filament एवं ए axial filament रो basal granule गुडी क तयारी होची कोथरो distal centriole ताले neck contains two centriole one is the proximal centriole which help in the process of cleavage after fertilization and second one which lies perpendicularly to that of first one or proximal centriole that is called as distal centriole and that distal centriole form the basal granules of axial filament. पिले माने axial filament रो जदि हमें स्ट्रक्चर देखिबा ट्रांसवर्स सेक्शन देखिबा ताहले axial filament is formed of 9+2 arrangement. It is having 9+2 arrangement. 1, 2, 3. पिले माने 9 double peripheral fibrils with 2 central fibrils. तेणु ए प्रकार अरेंजमेंट को कहा जाउची 9+2 अरेंजमेंट याको कहा गला 9+2 arrangement. The arrangement of microfibrils within the axial filament it is 9+2 arrangement अर्थात 9टा डबल पेरिफेराल फाइब्रिल पेरिफेराल पार्ट रे रहला एवं सेंटर रे दुईटा सेंट्रल फाइब्रिल रहला and it is covered by protoplasmic sheath याको कहला 9+2 arrangement. ताहले पिले माने this is all about that neck region of sperm. Then it is followed by that middle piece. The middle piece is the energy providing part of that spermatozoa. Sperm को जे energy जोगौची सही पार्ट हला middle piece as it contains mitochondria within it. पिले माने आगु समस्त जानि छ mitochondria is the powerhouse of the cell. तेणु आर काम हला energy जोगैबा for the movement of that spermatozoa, for gaining capacitation, for help in fertilization. So it provides energy. So this is the energy part of that sperm as it contains mitochondria which is arranged spirally coiled around the axial filament. Distal centriole तैयारी कला basal granules of axial filament. Middle piece रे axial filament रो चारि पटे माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइराली कॉइल्ड हैला दौड़ी भलिया गुडे हेकि रहला. Such type of arrangement of mitochondria around the axial filament it is called as Nebenkorn. पिले माने आपको कहला Nebenkorn. Such type of arrangement of mitochondria is called as
neven curve and it is all about that middle piece टिके पूर्व कहितली जे another dense peripheral cytoplasmic layer is present that is called as munchit which covers that middle piece and the nucleus पिले माने ए मिडिल पीस रे आउ गोटे कथा माने रख at the end of middle piece another pair of centriole present which is called as ring centriole and it is with unknown function तमे माने जते बेले बड़ा हबो बहुत रिसर्च करिबो स्पर्म विषय ताहले तमे ए रिंग सेंट्रियोल रो फंक्शन को जानिले तुमको गोटे गोटे साइंटिस्ट कह जिवो सो रिंग सेंट्रियोल with unknown function it lies at the end of middle piece ताले मिडिल पीस रो ऊपर नेक रे रहिला दीटा सेंट्रियोल प्रोक्सिमल और डिस्टल सेंट्रियोल नेक रो तळ को रहिला a pair of ring centriole present with unknown function then the middle piece is followed by the tail pile mane it is several times longer than that of rest part of the sperm rest part अपेक्षा ये अनेक गुण लंबा and it is covered by protoplasmic sheath and encloses that axial filament it is the elongated part and it is the tail of that sperm and that tail help in the movement of that spermatozoa within the female genital tract so that it can reach to that of ampulla where fertilization takes place ओविडक्टर आम्पुला पर्यंत जीवाकू ये मूवमेंट करैबारे साहाय्य करूची एवं काहे के मूवमेंट करूची फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन पिले माने द लास्ट बट नॉट लीस्ट इज द एंड पीस द एंड पीस is the last terminal part of that spermatozoa without any protoplasmic sheath only axial filament is present so students this is all about the structure of that spermatozoa आउ थरे टिके मने पके दउची तुमको स्पर्म हैला गोटे लिविंग सेल जहा मोटाई एवं आर लंबा होची ह्यूमन केस रे 0.02 mm एवं याकू विभक्त करा जायछि पांचटा भाग रे प्रथम हैला हेड नेक middle piece tail and end piece anteriorly it is formed of that head region which is formed of acrosome and nucleus then middle piece neck contains that two centrioles proximal and distal centriole and the middle piece contains that mitochondrial region the powerhouse of the cell so it provides energy for the movement of that sperm that is the middle piece and the arrangement of that mitochondria around the axial filament it is neven curve and the end of that middle piece contains another pair of centriole that is called as ring centriole pile mane acrosome bhitare rahila sperm lysine by hyaluronidase je help karuchi एगर membrane को dissolve करैबा पई during the process of fertilization then the middle piece followed by the tail and end piece pile mane so this is all about that spermatozoa or structure of sperm axial filament ताले पिले माने वर्तमान में देखिबा टाइप्स ऑफ स्पर्म हमें तो स्पर्म स्ट्रक्चर जानिले स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ले वर्तमान देखिबा केते प्रकार स्पर्म अछंती so based on presence or absence of tail present or absent of tail in sperm रे tail रो presence और absence अनुसार sperm गुडी को चारि भाग रे विभक्त करा जाय छी ताले four different types of spermatozoa are there on the basis of that presence or absence of tail first one is monoflagellate पिले माने mono meaning हैला one if a single tail is present in a spermatozoa such type of spermatozoa is called as monoflagellate sperm पिले माने monoflagellate sperm they
occurs in almost all vertebrates including human being. मनुष्य मानकर स्पर्म को जदि आम देखा पूर्व आम स्ट्रक्चर पढ़ी मनुष्य मानकर स्पर्माटोजोआ it is a living cell, it is motile due to presence of that tail and there is a single tail present, hence they are called as monoflagellate spermatozoa. पिले माने द्वितीय प्रकार रहला बाइफ्लाजेलेट स्पर्माटोजोआ आउ थरे कहि दउची बाइ र मीनिंग होची दुई एवं दीटा जदि टेल रहिला सच टाइप ऑफ स्पर्माटोजोआ इज कॉल्ड एज बाइफ्लाजेलेट स्पर्माटोजोआ एवं बाइफ्लाजेलेट स्पर्माटोजोआ देखा जाए टोड फिश रे जार जूलॉजिकल नेम होची ऑप्सानस ऑप्सानस नामक टोड फिश रे देखा जाउथिबा स्पर्म हेला बाइफ्लाजेलेट स्पर्माटोजोआ जेहेतु तार दीटा टेल अछि पिले माने the next one is multiflagellate spermatozoa multi ର meaning है many so many numbers of tail present in the spermatozoa they are called as multiflagellate spermatozoa पिले माने ए multiflagellate spermatozoa having more than two tails कारण दीटा टेल थिले ताको आमे बाई कहूचे गोटे थिले मोनो कहूचे ताले मोर देन टू इट इज ओलिगोपाइरिनस एंड मल्टीफ्लैजेलेट स्पर्माटोजोआ से माने को कहा जाउची ओलिगो रो मीनिंग है फ्यू अर्थात मोर देन टू ओलिगोपाइरिनस बा मल्टीफ्लैजेलेट स्पर्माटोजोआ पिले माने ए प्रकार स्पर्माटोजोआ रो एग्जांपल होची स्पर्म ऑफ दैट पाइला पिले माने पाइला हला गेंडा ताले गेंडा मानकर स्पर्माटोजोआ है multiflagellate so here the sperm is present head region is present which is followed by several tails अनेक गुडी टेल थिबारु एमान को कहा जाउची multiflagellate spermatozoa एवं एमाने हेले ओलिगोपाइरिनस जहां एग्जांपल होची स्पर्म ऑफ दैट पाइला पिले माने पाइला फाइलम मोलस्का गेंडा जूलॉजिकल नेम होची पाइला ग्लोबोसा पिले माने चतुर्थ प्रकार रहेला सो इन दीज थ्री they are flagellate spermatozoa as tail is present whether it is one or two or many or more than two but due to absence of that tail sperms are called as non-flagellated spermatozoa से माने कहिबा non-flagellated spermatozoa जहार एग्जांपल होची Ascaris lumbricoid पिले माने ताहा होची Ascaris lumbricoid Ascaris है जेनेरिक नेम स्पेसीज है lumbricoids Ascaris lumbricoids रे देखा जाउथि बा स्पर्माटोजोआ गुडी का रे टेल नाही तेणु से माने को कहा गला नॉन फ्लैजेलेट स्पर्माटोजोआस and their structure is amoeboid shaped here is the sperm of that Ascaris it is amoeboid shaped जदि गोटे एमीबा को हमें देखिबा जो बढ़िया इरेगुलर शेप्ड बॉडी दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर occurs in case of that sperm in Ascaris lumbricoids another example is there crayfish it is a crustacean it belongs to phylum Arthropoda ताहले ए crayfish रो जदि स्पर्माटोजोआ को हमें अनुध्यान करिबा it is a non flagellated spermatozoa as tail is absent from such type of spermatozoa and its shape is star shaped here it is the structure of that spermatozoa of crayfish and it resembles to the shape of a star hence it is star shaped आपको कहा जाउची star shaped spermatozoa पिले माने आउ थरे मन पकई दउची तुम मानकु for your better understanding आहुरी जदि हमें देखिबा
क्राब और लॉबस्टर मानक ठारे देखा जाउथिबा स्पर्माटोजोआ रॉड शेप्ड। पिले माने प्रथम रो आउथरे माने पका टाइप्स ऑफ स्पर्माटोजोआ आ पूर्व में पढ़ी सारी थिले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म तेणु टाइप ऑफ स्पर्माटोजोआ रे हम देखिले बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ दैट टेल और एब्सेंस ऑफ दैट टेल स्पर्म्स आर ऑफ 4 डिफरेंट टाइप। ए चारि प्रकार भितरु गोटे टेल जो स्पर्म रा अछि ताको कहले मोनोफ्लाजेलेट। पिले माने जदि ब्रॉडली क्लासिफाई करबा ताले दी प्रकार रो गोटे होची फ्लाजेलेटेड आ गोटे होची नॉन फ्लाजेलेटेड एवं ई फ्लाजेलेटेड स्पर्माटोजोआ गुडी को तीन भाग रे विभक्त करा जायछि। एक रहला मोनोफ्लाजेलेट स्पर्माटोजोआ जहा कि ऑलमोस्ट ऑल वर्टिब्रेट मानक ठारे देखा जाय था एंड इंक्लूडिंग दैट ह्यूमन बीइंग जहा पाखरे गोटिए मात्र टेल वाला जाता है। द्वितीय रहला बाइफ्लाजेलेट स्पर्माटोजोआ and the example is also a vertebrate and it is toadfish named as Opsanas। Opsanas नामक toadfish पाखरे देखा जाउथिबा स्पर्माटोजोआ पाखरे दुईटी लांज थाए तेणु ताको कहला बाइफ्लाजेलेट। Here two flagella is present and third one is multiflagellate। If more than two tails are present in the spermatozoa they are called as multiflagellate spermatozoa। They are also called as oligopyrenous and the sperm of that phyla gender sperm multiflagellate अनेक गुड़िए टेल जेहेतु अछि। पिले माने नॉन फ्लैजेलेट स्पर्म ताले नॉन फ्लैजेलेट स्पर्माटोजोआ जो मानकर जो स्पर्म गुडी कर टेल नै तार एग्जांपल हैला स्कारिस लुम्ब्रिकॉइड जहारा अमोबाइड शेप्ड स्पर्माटोजोआ जेहेतु टेल नै एवं क्रेफिश नामक एक क्रस्टासियन बा फाइलम आर्थ्रोपोडा रे थिबा एनिमल रो इट इज हैविंग स्टार शेप्ड स्पर्माटोजोआ। पिले माने दिस इज ऑल अबाउट दैट टाइप ऑफ स्पर्म। वर्तमान आमे नेक्स्ट सेशन को जिबा ए टॉपिक रो जहा होची फैक्ट अबाउट स्पर्माटोजोआ। स्पर्माटोजोआ संबंध रे आउ किछि जानिबा। पिले माने वर्तमान देखिबा सम इंपोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट दैट स्पर्माटोजोआ। स्पर्म विषय रे अधिक किछि एवं इंपोर्टेंट तथ्य जानिबा को हेले we have to go for that important facts about that spermatozoa। ताले प्रथमे मन रख पिले माने sperms was first discovered by Van Beer but human sperm was first discovered by A.V. Leeuwenhoek and Ham। Secondly, sperms are stored in cryopreservation technology। पिले माने cryopreservation technology एभली एक टेक्नोलॉजी जेउथिरे बायोलॉजिकल मटेरियल गुडी को वर्ष वर्ष धरी प्रिजर्व करिबा पाई -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमात्रा को मेंटेन करके लिक्विड नाइट्रोजन रे रखा जाए जेउथिरे द मेटाबॉलिज्म ऑफ दैट बायोलॉजिकल मटेरियल रिमेन जीरो and whenever it is required to use then increase the temperature and go up to its normal then it can be used। ताले फ्यूचर यूज करिबा पाई स्पर्म गुडी को स्टोर करके स्पर्म बैंक मानन करे ए क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्नोलॉजी रे संरक्षित करके रखा जाए। नेक्स्ट वन इज स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन 74 डेज। फिर माने स्पर्म तैयारी होबा पाई टेस्टिस रे सेमिनिफेरस ट्यूबुल रे 74 दिन समय लागे। द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म लास्ट अप टू 24 आवर। स्पर्म मोटिलिटी देखिबा जदी ए मोटिलिटी टा लास्टिंग करिबा 24 आवर पर्यंत सक्रिय होबा तापरे इट ग्रेजुअली इनएक्टिव बट इट कैन लाइव अप टू 72 आवर्स। 72 घंटा पर्यंत बचिबो किंतु 24 घंटा पर्यंत ये एक्टिवेट होके रहइबो सो दैट इट इज एबल टू पेनिट्रेट द वॉल ऑफ ओवम ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पिले माने some important facts, very important facts and you have to know through this video। smallest sperm found in crocodile and amphibians। सबुठारु स्मॉलेस्ट स्पर्म छोटिया स्पर्म देखा जाए कोथिरे क्रोकोडाइल और एम्फीबियन मानक ठार। एंड द लॉन्गेस्ट स्पर्म फाउंड इन ड्रोसोफिला बाइफर्का। पिले माने ड्रोसोफिला बाइफर्का जोटे फ्रूट फ्लाई कहा जाउची
ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर जेमिति गोटे स्पेसीज ड्रोसोफिला आउ गोटे स्पेसीज होची ड्रोसोफिला बाइफर्का जेउथिरे स्पर्म रो लंबा होची 5.8 सेंटीमीटर सो इट इज वन ऑफ नाइन एटा होची सबुठारु लॉन्गेस्ट स्पर्माटोजोआ जत्ते सब एनिमल स्पर्म अछि and last but not least the largest sperm found in Dicolosus Discoelosas होची सबुठाउ largest सबुठारु बड़ स्पर्माटोजोआ so these are the important facts regarding that spermatozoa so please remember it by seeing this video again and again which will be give more knowledge about that spermatozoa पिले माने ताहले प्रथम तो हमें ए वीडियो रे आरंभ कले स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्माटोजोआ ठार एको तीनटा सेशन रे विभक्त करा जायछि फर्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्माटोजोआ द्वितीय रे हमें पढ़िले टाइप्स ऑफ स्पर्माटोजोआ and lastly some important facts about that sperm पिले माने साइकोलॉजी रे गोटे टेलीग्राम ग्रुप तयारी हेछि टेलीग्राम चैनल खोला हेछि ए टेलीग्राम ग्रुप रे प्रतिदिन 5-5टा इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिया जाउछि एवं तार लिंक माध्यम पठेई देछि तमे ताको नै परिबा से लिंक को सो प्लीज स्टूडेंट्स सी माय वीडियो and for better video releasing please you subscribe to my channel then I will inspire for doing more and more videos. Thank you.